टेस्ट आवाज़ आ रही है? मेरी आ रही है? Test. 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 Kommt ein bisschen später an. Ne? Okay, dann machen wir das so. तू बस रिलैक्स हो। तुम्हारी आवाज़ भी तो है। 1 मिनट में मैं एक और चीज़ करता हूँ 1 मिनट ना ये सॉस एक मिनट टेस्ट अब इधर भी नहीं आ रही ना टेस्ट अब सही है अस्सलाम वालेकुम। या 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 टेस्ट jetzt ist besser? Test. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेस्ट 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7। सुन ली ठीक है, सही है। इनको दो माइक देने, दो माइक दे दो। पूरा फोन वो फोटो खींच रहे लिए तो बैठ सकते हैं ना, बैठ से आओ। यस यस चल एक आ जाइए सर, आ जाइए बैठ। अच्छा अमन भी आ जाइए प्यारे दोस्त, आ जाइए यार। अस्तगफुरुल्लाह। आ जाइए ओ भाई ललो जरा जल्दी जल्दी जवानो कोई फोटो ही खींच लो। दे जी दे अच्छा अच्छा
सर जी ये बैकग्राउंड है ना चले भी तुरते फिरते मिलना 4-5 खेल जो कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे नहीं लग रहे ठीक है क्यों नहीं मैं एक मिनट सिर्फ मैं फिर काम से जाना हाँ हाँ क्यों नहीं किया काम से नहीं जाना बस इतने रहना डिनर डिनर खाना ही असल है वो काम जड़ा ना हाँ और सर शुरू कर रहे हैं करना चाहिए तो सामने से अच्छा नहीं जब वो आएंगे फिर हम सब उठेंगे जज़ाकल्लाह हाँ जी चलो सिद्दीकी साहब बाद में होती है आपसे जरा बैठते हैं बल्कि करते हैं आफ्टर पार्टी हाँ हाँ जज़ाकल्लाह सर जज़ाकल्लाह ओह अच्छा जज़ाकल्लाह मेरे दोस्त आज बैठ भी जाए चले इनके बाद लो जी बड़ा प्यारा पीछे लो ये इधर देखो जी आप आने बैठ सकते टेस्ट 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 बिलाल आ जाओ ना यार बिलाल आ जाओ ये भी लगा देते फिर डायरेक्ट आया आओ जज़ाकल्लाह सर जज़ाकल्लाह आज चल बैठिए बहुत शानदार मीर साहब ये एक बताइएगा मीर साहब हो गई आज आइए प्यारे दोस्त आप भी आइए ना यार एक फोटो है आपके साथ तो मीर साहब आप ये माइक दे दें सिर्फ ना हम दोनों की एक नए खास जगह चलो एक कैमरा दिया एक सेकंड बहुत शुक्रिया सर आपका बिलाल आ जाओ बिलाल वीडियो बनने लगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बड़ी खुशी हो रही है जी जवेद भाई से मुलाकात हो गई वो भी बैतुल में ये सब आपका बड़ा मैं तो वहाँ जाऊँ आप तशरीफ़ लाए अल्लाह आपको जज़ा दे ये फैमिली टॉक में अभी चली गई हाँ बिल्कुल ठीक है अच्छा आप फिर एंजॉय करें यार डिनर तो खाए ना अच्छा ठीक है सर सबको सलाम कोई बात नहीं साकब इधर तुसी तो आपकी हो गई है Test. Test. नहीं साकब बैठो Die Einstellung hier ist viel besser. दोनों दी ना एक नजर खींच दो दरम्यान से होकर ये यादगार तस्वीरां ने जज़ाकल्लाह सर ये सब इंशाल्लाह मुलाकात होगी बिलाल भैया आप आइए आप ओ सर 2-3 फैसले हैं मोबाइल दफ्तर में अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ मैं आपको
speichert er die Aufnahme? हेलो अजी साहब आज आज कैमरा दे दें मैं पूछने नहीं आया सिर्फ बिलाल अब आप बैठे रहोगे ना तो फिर बात मैं भी दस्या अब्दुल साहब हेलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ Ich brauche ये कदाकार आया था अफजल ये हॉस्पिटल के लिए वो लोगों ने कहा जी हम तो अमेरिका जाते हैं इस तरह करते हैं अब्दुल साहब वीडियो बनाते कि फोटो बनाते पे वीडियो बनाते फोटो प्यारे नहीं कल रात को कल 13 घंटे गाड़ी पे और फिर रात को सोई नहीं नहीं ये सारे बैठे हुए हैं सारे ये राना रजाक है मीर साहब इधर आ जाए इधर आ जाए क्यों नहीं बल्कि सारे ग्रुप को अपने बुलाना चाहिए Warte mal, wechseln wir halt die Kabel. उनके पास पड़ा हुआ Test. Das wollte ich halt mal gar nicht machen. Mit Gimbal drauf. Wie krank. Ja, ich wollte das Gimbal auf dieses Slider kann man noch mit. Die sind doppelt so alt wie die und die halten das. Wo ist es? Wo sind die? Unten. Warum hast du so viel Pinguin? Du musst Schlüssel angesagt. नहीं ये तो हाथ में पूरा हाथ में काम इनको जब इंटरव्यूज करेंगे फिर हाथ में कर लेंगे wir machen das jetzt egal ich mach das schon mach das mal ab Was denn, du kommst nicht weit damit, guck mal das Kabel ja an hier so bisschen und dann hier bisschen und dann wieder zurück mach Aber lass dran achso nein mach ab फारग हो जाना फिर मुझे चाबी किधर है पूरा ऑडियो तो बंद कर दो
डोंगी को दे दूँ, आप ही आएंगे। आओ ना। एक गल मैं पुछनी है तस्वीर तो पहला जी जी रोजी मेरा भाई है लंडन तुसी सदर हो मेरा कहने जी 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 मैंने मिले मैं तो 1 सेकंड च मिलदा मैंने उन्होंने एक परफ्यूम दिता है और मैं लैके जाना मेरे को आ गया है बस ये ही सी मेरा काम जी 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 ठीक है मैं तो मिलदा रोजी के भाई है? जी भाई है ये रोजी वाह, रोजी साहब तो हमारे आपका हादसा बहुत तेज होना चाहिए और रोज रोजी दफा तो- मैंने तारीफ करवाया कि उसका बड़ा भाई है मैं फिर माफी चाहता हूँ। मैंने अब नहीं मैं भूलता। अच्छा, इधर आ जा। वजह ये है कि रोजी तो हमारे क्या कह लें दिलों में रहते हैं, दिलों में रहने वाले हैं। रसूल आ जाइए, आ जाइए। कमाल कर दे यार सदर साहब मसी राणा साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ, चलिए इसके बाद आ जाओ। ठीक है आ जाओ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰੀਆਂ मेरे मगर ही आए कोई हालत नहीं ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਦੋ ਨਾ ਕਿਸੇ मैं कैमरे से कैमरा लेके ਇੱਥੇ आ जाओ पीछे ये इसके साथ बना लेंगे इसके साथ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ कादे वास्ते ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ सोना है तो फिर तुम क्यों आए हो ਲਓ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ पहले मैं नहीं तुसी सोने तो है ही नहीं ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ नहीं ਨਹੀਂ साहब आप अपना कैमरा देना। चलो उधर देखो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अभी हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू होगा हम अमीर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे जो यूके के मेहमान आए हैं उनकी पूरी एक लिस्ट चाहिए तो वो जितनी जल्दी हो मुझे मिल जाए ताकि हम उसको नोट भी कर लें राणा साहब एक आगे से हट जाए एक तस्वीर होने दो जी अल्लाह ताला रहम जी अभी दे रहे हैं नाम, अभी दे रहे हैं। थैंक यू सब मैंने फॉरवर्ड कर देना नहीं करनी मीर साहब लिख रहे हैं, आपको 2 मिनट में। ठीक है ठीक हो गया प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब तशरीफ़ ले आए प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब मौलाना शमशाद अहमद साहब कमर भी तशरीफ़ ले आए मौलाना शमशाद अहमद कमर साहब मौलाना शमशाद अहमद कमर साहब प्लीज़ तशरीफ़ ले आए आप मौलाना शमशाद अहमद कमर साहब प्लीज़ तशरीफ़ ले आए सदर साहब अंसारुल्लाह प्लीज़ तशरीफ़ ले आए मोहतरम लोकल अमीर साहब फ्रैंकफर्ट मोहतरम लोकल अमीर साहब फ्रैंकफर्ट तशरीफ़ ले आए मोहतरम मुबारक सदीकी साहब प्लीज़ अभी तशरीफ़ ले आए मोहतरम मुबारक हम सदीकी साहब नहीं आप अल्हम्दुलिल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। एक गाड़ी ने अपनी लाइट ऑन रहने दी है Wiesbaden TX 395
अस्सलाम वालेकुम। एक गाड़ी वीज़बार्डन TX 395 की लाइट चल रही है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, प्लीज़ वो अपने जाके लाइट बंद कर दें। वीज़बार्डन TX 395, ये फॉक्सवैगन की गाड़ी है, फॉवी की। वीज़बार्डन TX। प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब प्लीज़ तशरीफ़ ले आए। कट। थैंक यू सर। मेरे मुंह से एक तस्वीर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया आपने। तो अब प्रोग्राम का आगाज़ होता है तिलावत कुरान करीम से। वो मोहतरम अब्दुर्रज़ाक डोगर साहब कुरान करीम की तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ। अब्दुर्रज़ाक डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम।
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नज़म के लिए तशरीफ़ लाएंगे शेख खालिद महमूद साहब। मंजूम कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्वान है दरसे तौहीद। वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, जो कुछ बुतों में पाते हो, उसमें वो क्या नहीं, वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, सूरज पे गौर करके न पाई वो रोशनी, जब चाँद को भी देखा तो उस यार सा नहीं, वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, वाहिद है ला शरीक है और ला ज़वाल है, सब मौत का शिकार है, उसको फना नहीं, वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, सब खैर है इसी में कि उससे लगाओ दिल, ढूंढो उसी को यारो, बुतों में वफा
नहीं, वो देखता है गैरों से। क्यों दिल लगाते हो इस जाए पुर अज़ाब से? क्यों दिल लगाते हो दोज़ख है जे मुकाम, ये बुस्तां सरा नहीं, वो देखता है गैरों से। क्यों दिल लगाते हो जो कुछ बुतों में पाते हो? उसमें वो क्या नहीं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। अब जर्मन ज़बान में राहिल गाफूर, इंफॉर्मेशन über TI College Old Student Association Germany, राहिल गाफूर। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sehr geehrter Herr Amir Sahib, sehr geehrte Gäste. Ich freue mich, Sie alle heute persönlich im Namen der TI Old Students Association begrüßen zu dürfen, nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Unser letztes Treffen war im Jahre 2019 gewesen. Ein besonderer Dank geht an die TI College Old Students Delegation aus England, welche unserer Einladung mit 20 Gästen gefolgt sind. Die TI College Old Students Germany Association wurde vor 16 Jahren durch die Erlaubnis von A.Ghafoor gegründet. Seitdem konnten wir durch die Gnade Allahs viele soziale Projekte unterstützen, wie Stipendien, Schulbau in Afrika oder Brunnenbau für sauberes Wasser. In den letzten Jahren konnten wir jährlich bis zu über 3 Millionen pakistanische Rupien an bedürftige Studenten in Form von Stipendien ausschütten. Außerdem planen wir den Bau einer weiteren Schule in Zusammenarbeit mit Humanity First in Afrika. Möge durch die Gnade Allahs und ihre Gebete und finanzielle Opfer dieses Ziel bald erreicht werden. Alhamdulillah konnten uns bereits erste großzügige Spenden erreichen. Jazakallah. Abschließend möchte ich Ihnen allen nochmal danken für Ihr zahlreiches Erscheinen und ein besonderer Dank gebührt unserem Amir Sahib, welcher uns mit seiner Anwesenheit heute eine besondere Ehre erwiesen hat. Möge Allah unsere heutige Veranstaltung segnen. Amin. जज़ाकुमुल्लाह। अब मोहतरम मुबारक सदीक साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी एसोसिएशन के बारे में कुछ मालूमात और तारुफ भी करवाएँ। मोहतरम मुबारक सदीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब मेंबरान, मुकर्रम मोहतरम सदर साहिब और मोहतरम अमीर साहिब, मोहतरम सदर अंसारुल्लाह साहिब, मोहतरम मुरब्बियान इकराम, आप सब की भी शुक्रगुज़ार हैं। इतने खुलूस, इतने मोहब्बत से आपने हमारा इस्तक़बाल किया, इतना हमें वक्त दिया। यकीनन ये सब बरक़ात खिलाफत हैं।
बात ये है कि हम सब को जो हम सब मेंबरान हैं we should always remember those teachers who taught us. We should remember our parents who sent us to that college. Some of them they could not even afford, but our parents they sacrificed, and because of their prayers, because of their hard work, by the grace of Allah, we got education from that institution. एक बहुत पुरानी कहानी है, आप सब ने सुनी होगी, बहुत पुरानी है कि एक बूढ़ा आदमी, an old man, he was about 100 years old, and he was planting a tree of fruit. So somebody, a passerby, he asked that old man that why you are planting this tree. He said, yes, because one day it will bear fruits. And he said, no, you are wasting time. By the time this plant will grow and it bear fruit, you will be gone, you will die. So you are wasting your time. He said, I'm not wasting my time. My forefathers, they planted trees for us, and we had the fruit of that. Now this is my duty to plant trees, and forthcoming generations, they will have the fruit. So we should always try to think the sacrifices our parents they made. They had very little money, to be very honest. All those who have got education from that institution, at least, the parents there, if you see their salary, it was in hundreds, which is like £5 per month, and they could manage everything in that. So we should always remember them in our prayers, who gave us this day, this beautiful day that we are here, and we are proud of that we got this education. In UK, by the grace of Allah and with the guidance of Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asl Aziz, although our association is very small, it's 150, and about 50 of them, they are that much like aged or old that they cannot even attend programs. So about 100 members we are. And Huzur, it is kindness of Huzur. Huzur said only £2 per month. Take chanda from them. So it's £24 per year, and we are 100 those who give chanda. But some of them, they donate generously. They make more sacrifice. And in last 3 or 4 years, by the grace of Allah, we have built a college in Burkina Faso with the cost of about £50,000, and about 300 people, students, they are studying there. And in Sao Tome, we have made a primary school where about 400 students, they are getting free education. And now in Niger, we are making a clinic. And apart from that, we have, I think, installed about 20 or 30 water wells, and the student help that is on the top. Now can you imagine that 100 people paying £24, that makes 2400. But again, there are some people, they realize this fact that yes, this is a noble cause and we need to donate more. मेरी आप स्टूडेंट से भी सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो सदर हैं मुकर्रम मोहतरम अब्दुल गफ्फार डोगर साहब बहुत मेहनत से, बहुत खुलूस से इस एसोसिएशन को तरक्यात की जानिब लेके जा रहे हैं. तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आपसे बहुत ताउन करें और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें. एंड एट द एंड आई एम थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड अमीर साहिब and Muhtaram Sadr Sahab Ansarullah and Murabbiyan Ikram, and of course our Professor Chaudhry Hamid Ahmed Sahib, who is here out of his love. So Mir Sahib, please remember us in your prayers, and please today do give us, whenever I have seen Amir Sahib, I have seen him smiling. Even after a long journey, when he reached London this time, you know, he was on bike, and again he was smiling.
So Amir sir, today you have to tell us the secret of this beautiful smile as well. Jazakallah जज़ाकमुल्लाह। अब मैं प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो बेशक बैठे बैठे अगर कुछ बातें बताना चाहें कॉलेज के बारे में तो प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर साहब ने मुझे इरशाद फरमाया कि 1-2 मिनट आपसे बातें कर लूँ। जब दोस्त इकट्ठे होते हैं जिनसे सालों साल मुलाकात नहीं होती तो दिल तो करता है लंबी बात करने का, लेकिन चूँकि टाइम इतना नहीं है, मैं 1-2 बातें तो दूसरी करने से पहले चौधरी दाऊद अहमद साहब, ये यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा सीनियर, चौधरी साहब ज़रा 1 सेकंड दो से दिखा दो, ये is the senior most from among the students who are present here. ये चीफ प्रीफेक्ट भी थे और चीफ प्रीफेक्ट आपको पता he is like his staff. He has been Amir of his town for several years. तो अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला इनको जमात की खिदमत की भी बड़ी तौफीक दिया। हमारी खुशकिस्मती है कि ये बाई चांस जस्ट ऑन ए शॉर्ट विज़िट आए हुए थे तो वो तशरीफ़ ले आए। दूसरी बात करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त और आप सब जानते हैं मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद शरीफ खालिद साहब, उनको कल स्ट्रोक का लाइट अटैक हुआ है जो उसको शलागन फाल कहते हैं। ही स्टिल इन हॉस्पिटल और उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे सारे दोस्तों को, उन्होंने यहाँ आज नज़म भी पढ़नी थी, बल्कि एक नज़म भेजी भी है, वो सदर साहब ने टाइम की वजह से उसका मौका नहीं दिया, वरना उन्होंने इस मौके पे नज़म भी एक लिख के भेजी थी। तो वो सबको सलाम कर रहे थे, आप सब जानते हैं। सिर्फ एक कमेंट सदर साहब ने मुनासिब समझा कि the association should be introduced to Amir Saab. That's why he asked him to say something in German. But I tell you, Amir Saab knows all the activities and he is very well versed in what we are doing. So it's not a new thing for Amir Saab to be here. I think our friends who came from who have come from England, they know that even the last time they came, he was the one who opened the ceremony. So he knows very well what's happening and what Tekosa is doing. The last I want to say is, we started the association primarily for the purpose of helping those poor students whose parents cannot afford to educate them, and particularly in view of the discriminatory treatment that the government of Pakistan and the majority of the people of Pakistan are doing with the Ahmadi community, the children inclusive. So in this situation, it's very, very important that we contribute for them. I'm so pleased that Sadr Saab has not only continued with that fund, it has certainly added to that. As we started, the association in England also started, but now in that way, they are far ahead of us. And our present Sadr Sahab promised with Huzur that we shall contribute
on per rooms in a school and a water well. When he came to me and told me that he has already promised, I was a bit upset. I said, one should not make a promise with Khalifatul Masih unless we are sure that we will be able to fulfill it. But God accepted his intention, his wish, and just in a few days, one of the members offered to pay the whole expenses. And he paid in cash, and the Sadr Sahib was able to fulfill that promise. So my request is that this should continue. Basketball and football and tennis, and these are actually secondary functions of the association. The primary purpose is to get together, exchange memories, and we have so many good memories. I think most of you were students when Hazrat Mirza Nasir Ahmad, the Khalifatul Masih Salih, was the principal. And you know how kind he was. He once said he has reared the college like his own children. One of the wishes of Khalifatul Masih Khamis was that we should also associate our children so that they also know what sort of climate we had. I'm sorry to say that very few of us have paid to that attention, to that wish. Sadr Sahib and some others have also tried to contribute in terms of, not in money, but in terms of associating the children with it. So there are so many other things that I want to say, but because of lack of time, I think this is enough. I'm grateful also to all of you, those who have come from England and those who are here, to honor us and the association with their presence, and particularly Amir Sahib and Sadr Sahib and Salullah and all the Mubalighin and thank you very much. So I do not know, each time I come I think this could be my last present with you, but only God knows. So please pray for me. My health is deteriorating very fast, and I do not know when the time will come. As I said, I repeat, please pray for Sharif Khalid Sahib as well, because he has asked me to request you for prayers. Assalamu alaikum. अब जो हमारे मेहमान यूके से आए हुए हैं उनको मेडल्स वगैरह दिए जाएंगे, तो हमारे पास लिस्ट है. आई रिक्वेस्ट अमीर साहब प्लीज़ कम विद मी, वी गिव द मेडल्स आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम टीए कॉलेज फ्रॉम यूके. शकील साहब आप भी आ जाएं. अस्सलाम वालेकुम. या मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ. सबसे पहले मुकर्रम मुबारक सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएँ और ओके. उसके बाद चौधरी अब्दुल मन्नान अतर साहब, चौधरी अब्दुल मन्नान अतर साहब. राना अब्दुल रज़ाक साहब, राना अब्दुल रज़ाक साहब. उनके बाद हैं अताउल कादिर ताहिर साहब. या मिर्ज़ा नबात साहब,
ओके मिर्ज़ा अब्दुल बातिस के बाद हैं ज़ियाउल हक कुरैशी साहब, उसके ज़ियाउल हक कुरैशी साहब हैं, उसके बाद आसिफ अली परवेज़ साहब, आसिफ अली परवेज़ साहब, इनके बाद आसिफ अली परवेज़ साहब, मुज़फ़्फ़र अहमद चट्ठा साहब, आमिर अहमद खालिद साहब और उसके बाद खालिद महमूद साहब, आमिर अहमद खालिद साहब और खालिद महमूद साहब, उसके बाद अजीज़ अहमद ताहिर साहब हैं, और इनके बाद अजीज़ अहमद ताहिर साहब के बाद है राना इरफान शहजाद, इसके बाद मीर शफीक महमूद ताहिर साहब, नासिर अहमद फजल साहब, इसहाक खालिद साहब, इसहाक खालिद साहब के बाद है हमारे आज के बेस्ट खिलाड़ी जो हैं इनाम कुरैशी साहब, मेरे साहब इनाम कुरैशी साहब हैं, ये आज के बेस्ट खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, राना नासिर अहमद साहब, राना नासिर अहमद साहब और मोहम्मद अकबर फ़ारूक साहब, आगा हबीबुल्लाह साहब आखिर में हैं, लेकिन उनका नाम आखिर में आ गया है, वो आखिर में नहीं है बल्कि वो भी इस ग्रुप पे शामिल हैं, आगा हबीबुल्लाह साहब, बस नाम खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा इनको पैक कर दो वापस Assalamu alaikum. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm very pleased to be again in this auspicious gathering. And it is rare for me to say that I'm in a gathering with elderly people, because mostly I'm one of the oldest, yeah? And it is a very good situation to be a young man amongst you. Yeah? And when I talked with some of you, I came to know that, you have gone far ahead. Far ahead. You have gone to 80, 84, 85, 86. MashaAllah, and keeping yourself in good position. Alhamdulillah, I'm very grateful too to the delegation from UK, because 20% of the members have come over here. It's a high, percentage. Yeah? And I would like to take it as a challenge when you are invited to UK
to take it up and at least come as well with 20%. I've heard that you have about 200 registered members, so keep in mind you have to go with 40. Yeah? Maybe you need a comfortable seating arrangement or something like this, but anyhow. Even I found it very interesting that in this gathering, celebrating being a part of a very auspicious school, an institute which has helped a lot to improve the academic development of the Jamaat. I think it was a breakthrough and it has set standards. And now already the fruits are being seen when we see our children, how they are moving forward and how they are getting expertise in all the fields. And it is a sign that now we have listened in one of the last meetings with Hazur Rectors, may Allah be his helper, where he has mentioned from America at least, now the first Abdus Salam should come up. Yeah? And already we have seen something is being developed over there. So Europe should follow. Yeah? Of course, you will not make the challenge, but your children will make the challenge. And for this, of course, we have to pray a lot to give them the base. I'm always very fascinated when I receive a letter from the TA College High School from your association, and sometimes by mistakes, you know, all the addresses are being disclosed, yeah, and I see a long list. You know, I don't know how many, yeah? And I'm always afraid, hopefully all this 300 or 400 or sometimes seems to be 600 addresses, yeah, will not be disclosed and somebody makes a joke out of it. But it means and it shows that there's a strong organization behind. Yeah? And I know Professor Mitsab has done a lot to establish the ground for it. Yeah? And hopefully we can continue this association. And of course, in the moment, we have not a high school association, we have not a school, but why not to keep in mind that in future, Jamaat can establish schools as well. The churches have established schools, why not we as Ahmadis? At least in Germany, we have established the An-Nusrat Association. It's a welfare organization which is able to establish schools, because we have about, only in Hessen, in one province, we have about 60 school teachers. Yeah? Of course, mostly ladies, but we have school teachers. We can establish a school. So please pray in this direction that we follow the example of the school which you attended, which was a very great example. I see that there is spirit and mental strength amongst you, but I would request keep a bit this physical issue as well intact, sometimes only by walking, but movement is very important. And as we have heard that our dear brother Sharif Khalid Saab, I saw him during these days very active, but this can happen, and if you move and go out in the morning, have some walk, yeah, and if possible, take your wife along with you, it will give you support and it will give you more time. And we need you longer, yeah, because when we worked in this An-Nusrat Association, and we are established, what you can say, the Beerdigungsinstitut, what is this in English? This funeral association, we do it now by our own. We are not depending on Turkish people or so, we do it now on our own. So we went into the statistics. So we found out that
the average German who dies with about 81 years. And then when we checked, of course, what about the average Ahmadi Pakistani in Germany? And we came to know it's 71 years, the average age. So most of you have already extra years, yeah? And alhamdulillah, Mubaraku, and continue with this and help us to improve the statistics. Of course, when the Jamaat will grow younger, these figures will be more close to the average here in Germany, but it has something to do with food, it has something to do with, I think, physical exercise. Where I have no problems is about mental and spiritual exercise, because there we are very strong. In the end, smiling. Why I'm smiling? Because I don't feel any more pain when I'm finished my job. Yeah? And then I'm smiling and I enjoy. But before you come to smiling, you have to suffer. I mean, this is a part of the philosophy of life. Yeah, you have to go through trials to reach to the heights and to the peak, and it's in sport as well. So let us move in this direction. And once again, I'm very happy to have this association here, of course, in UK too, because it will strengthen the Jamaat, and I expect not only monetary help, for certain projects, yeah. I request you should pray a lot, especially what was mentioned for your children, so that they grow with the spirit which you have gained through this institution in the presence of third Khalifa at that time, and all those special, and selected people and holy people which were amongst you. So in this way, Jazakumullah for inviting me again and again, and I'm looking forward. Assalamu alaikum. तमाम मेंबरान का और मेहमान का आपका शुक्रिया। तो अब दुआ होगी, दुआ के बाद खाना होगा। मैं मोहतरम अमीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ करवा दें। आई रिक्वेस्ट प्रे फॉर दुआ। आमीन। खाने के लिए मेहमान तशरीफ़ ले आए।